thousands of vehicles trapped, blocked by extreme snowfall. The destination was Murray, an idyllic tourist hotspot situated high in the mountains. As temperatures fell to -8 degrees Celsius on Friday night and snow began to fall, people began to abandon their vehicles, proceeding on foot. This caused a massive backlog, and with nowhere to go, tourists were left in their cars to battle the freezing temperatures overnight. Many died of hypothermia, while some succumbed to the effects of carbon monoxide poisoning caused by extended running of car heaters. वो गाड़ियों के अंदर जो है उधर ही दम तोड़ गए हैं, कुछ के ऊपर गाड़ियों के ऊपर दरख्त गिरे हैं। लेकिन ये है कि अभी कल का दिन भी मरी में ही फौज को लगेगा और हाईवे वालों को लोगों को निकालने के लिए बहुत ट्रैफिक जाम हुई। Rescue workers wade through over 4 feet of snow as they check the immobilized cars for survivors. काफ़ी गंभीर हालात हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल है, लोगों के लिए बहुत परेशानी है और हम मेडिसिन और खाने पीने की चीज़ें और पानी लेके आए हैं लोगों के लिए रेड क्रिसेंट की तरफ से। The army has been mobilized in its numbers to try and rescue hundreds of people still stranded at an altitude of 2,300 meters. अब उधर गुलडना की तरफ और पहाड़ियाँ की तरफ हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं और ज़रा मौसम ख़राब है, ज़रा मौसम बेहतर हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। 60 kilometers away in Islamabad, the repatriation of bodies continues. The majority of the victims were from the capital, having travelled to Murray on family holidays. Pakistani Prime Minister Imran Khan said he was shocked by the tragedy. Murray has been declared a disaster area and the population has been instructed to avoid the area for the time being.